name is Rajiv Bajaj, Jane RKB, और मेरे साथ हैं as usual Adv Pradeep Nambiar on Nation Now. Pradeep ji, yes, sir. We are dealing with a very interesting subject today. One of the most rocking murder case from 2017. Yes, but it shook Mumbai. It shook Mumbai. But isn't it amazing that the man who owns this plot now, was held guilty of trespassing the very place that he owns? Yes. Isn't that amazing? A lot of twists and turns in this entire thing. This is 167A, the Sundar Nagar bungalow, which is most famous after Selene Violet Roque D'Souza murder case in 2017. Yes, which has now been called an accidental death. Yes. Violet, yes. Selene Violet D'Souza, Roque D'Souza. Yes. She was murdered in 2017. This is the plot. She was murdered by her own husband, Roque D'Souza. Then it was FIR registered. He was taken in custody. He was arrested. He is out now. We need to know why, how he is out. But after that, लेकिन अभी तो एक जजमेंट आई है कि भाई ये एक्सीडेंटल डेथ है. Yes, बिल्कुल. So now he's out from jail and he's come back. And this is the property that we are talking about. Yes, and here's the gentleman. 167A Sundar Nagar Kalina. This is the most controversial bungalow and talked about all of Mumbai. पूरे मुंबई में इसका चर्चा हो रहा है सर. And this is the gentleman who owns the place. Yes, actually he's got the papers. Yes. Abid Ali Tanaji. He says he's got the papers. We went through the records. We saw a chain of documents from 1951, 52 to 1980, where his father purchased it from right up to 2018, yes, and now up till today. Now he's got the possession. He's got the possession of the bungalow, and we are talking. And you're talking. You're finding out this is. Because the whole Mumbai wants to know the entire truth. इस बंगले में इस मर्डर केस के बाद सच्चाई क्या है? प्रदीप जी सबसे पहले 2017 मैं जानना चाह रहा हूँ. Yes sir. वो बाकी मुंबई क्या जानना चाहती नहीं जानना चाहती मुझे मालूम नहीं है. Okay. लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ. Yes sir. तानाजी साहब, आपके सारे पेपर्स हमने देखे, डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने देखे. ये जमीन आपकी है? बिल्कुल सर. ये जमीन आपकी? बिल्कुल सर. ये जमीन आपकी है, आपने खरीदी हुई है? यस सर. मतलब आपके पिताजी ने खरीदी और आपको गिफ्ट डीड में आपके पिताजी ने दी. कौन सी डेट में दी, कौन से साल में? 99 में दी. 1999 में. अब प्रदीप जी बिल्कुल सर, आप जरा इनसे बात करें और इनसे ये पूछें. मैं जानना चाहता हूँ कि जिस आदमी की जमीन है, जिस जमीन पर ये खड़े हैं, और आज भी आप देखें एक्सेस इन्हीं का है. देयर इज नो प्रॉब्लम. पोजेशन इनका है, एक्सेस इन्हीं का, हर चीज इनका है. तो इनको ट्रेसपास के लिए जेल क्यों भेजा गया? मतलब ये जानना चाह रहा हूँ. बहुत 2017 में you had Mr. Roque D'Souza going in for the murder of his, alleged murder of his wife. Selene Violet D'Souza. एक मिनट जरा एक्सप्लेन कर. बिल्कुल सर. कि जमीन अलग है, स्ट्रक्चर अलग है. यस बिल्कुल. कौन सा स्ट्रक्चर सर? सर ये स्ट्रक्चर है. ये सामने वाला. यस सर. अच्छा, this was a structure that Roque D'Souza and his brother and Joseph D'Souza was staying. Yeah, this is Roque D'Souza. The whole family, mom, sisters and all. Mom, sisters. पूरे family इसके अंदर रहते थे. This is a structure. Roque D'Souza and Joseph D'Souza were structural owners. Yes sir. Roque D'Souza, Joseph D'Souza were structural owners of this property. This land belongs to him. Belongs to him now. Have they transferred the rights of the structure to you now? Yeah, I have taken all the documents. In 2005, they have done an MOU with me. Yes. And after that, all the power of attorneys and all these things has been done. Until date, like the assessment, light bill and everything has been transferred on my name. लेकिन ये बताएं तानाजी साहब, ये बताएं. और मैं देखिए साहब, सारी दुनिया जानती है, मतलब सारी दुनिया का बहुत बड़ा हो जाएगा. लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं कि मैं 40 बरस से जर्नलिस्ट हूँ, दिल्ली से, 1993 में मुंबई से. लेकिन ये केस मैंने बहुत इंटरेस्टिंग देखा है. सबसे पहली बार मैंने देखा है कि जिस आदमी की ज़मीन हो, सारे कागजात जिस आदमी के नाम पर हों, उसी आदमी को पुलिस पकड़ करके ढकेल के अंदर जेल में डाल देती है. कहती है कि भाई आप ट्रेसपास कर रहे हैं. ये क्या मसला है तानाजी, ज़रा बताएं प्लीज़. ये कहाँ से FIR रजिस्टर, जो 2019 में FIR कैसे रजिस्टर हो गया? रॉक डिसूजा ऑथर और जेल में था, कैसे हो गया? सर कैसा है ना सर, ये ज़मीन हमारी डैडी की थी, वही पूरा देख रेख करते थे इसका, और ये लोग एज ए टेनेंट रहते थे उसमें. ओके. तो वी वर नॉट इन्वॉल्व इन ऑल सच थिंग. वो रेंट पे चलता था. डैडी यूज्ड टू लुक आफ्टर. तो सडनली रॉक ने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया. एंड देन वो पुलिस कस्टडी हो गई, सब हो गया एंड ऑल दैट. पुलिस आके पंचनामा करके घर को लॉक वॉक कर ले गई. और पुलिस का काम था कि एल्डर सन ऑफ द फैमिली को चाबी देना था. एग्जैक्टली. बट पता नहीं पुलिस ने चाबी रॉक की सिस्टर इन लॉ
who is the main accused according to me in this murder case. Okay, okay. Because there is a love triangle in this. All right. Why was Rock's wife murder? Yes. This female was there behind Okay, it. okay. So पुलिस ने वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट कहीं था ही नहीं. Yes, yes. ये लोगों ने रॉक ने कमिट किया कि मैंने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया. Yes. गला दबा के they took him, was arrested in 302 and now the case is discharged. Accidental death after 4.5 years. Okay. पता नहीं क्या था. Then this fellow Rock's sister-in-law जो पीछे का पार्ट है उन्होंने सडनली किसी अनवर नाम के यहाँ रॉक का सिस्टर इन लॉ, रॉक का सिस्टर इन लॉ ने उसको वो पार्ट भेज दिया. Okay. उसने वहाँ पोजीशन ले लिया. आई Okay. सीन सम कंस्ट्रक्शन वर्क गोइंग ऑन. Okay. सो मैं आके देखा तो अभी but यहाँ how तो can rock sister in law sell that because particular police thing? gave the keys to him. अच्छा She इसलिए used उस to come here. दौरान Yeah. सर ये एक चीज जो तनाजी बिकॉज हम लोग पुलिस से भी बात किए थे बिफोर कमिंग हियर वी विल बी टेकिंग द पुलिस वर्जन आल्सो ही हैज गॉट अ पॉइंट ही सेज Joseph and Rock was staying together in this particular place. Yes. So if Rock is arrested, how the keys goes to the sister-in-law? Because sister-in-law is not a blood relative. She doesn't stay here. Yes. तो डायरेक्ट ब्लड रिलेटिव जो होता है एक मिनट जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल सर, उनकी जानकारी के लिए बता दें. जो ये सिस्टर इन लॉ कह रहे हैं तानाजी और प्रदीप जी, वो रॉक साहब की साली हैं. मतलब उनकी कत्ल हुई बीवी, यानी उनकी जो बीवी इस दुनिया में नहीं है, कहा जा रहा है एक्सीडेंटल डेथ है, उनकी बहन है. इनकी ब्लड रिलेटिव नहीं है, मतलब उनकी रिलेशन में नहीं है. बिल्कुल मतलब बिल्कुल. ये कहने का मतलब उनकी साली साहिबा है. उनकी यस उनके वाइफ के सिस्टर है. जी. द पॉइंट इज ब्लड रिलेटिव नहीं है बट शी गॉट द कीज. Yes. नाउ शी गॉट द कीज. नाउ ही सेज चाबी उनके पास आए तो ये पोर्शन जो है, क्या हुआ? ये पोर्शन है, ये पोर्शन है उनके कार, ये पोर्शन जो ग्रीन कलर है, ये उन्होंने बेच दिया सिस्टर इन लॉ ने. सिस्टर इन लॉ एक्चुअल सर ये उत्पल गोम्स का रूम था. उत्पल गोम्स का जो टेनेंट है Yes. रॉक जोसेफिन के, इन्होंने उनको ऑलरेडी सरेंडर कर चुके थे. बट वो 2005 में जब फ्लड हो गया एंड ऑल दैट, तो वो घर पूरा डूब गया था, सब खराब हो गया था, स्ट्रक्चर एकदम खराब था, तो वो ऐसे ही पड़ा था. बट रॉक एंड दिस पीपल दे यूज्ड टू लुक आफ्टर द प्रॉपर्टीज, जोसेफ एंड ऑल. यस. तो वो लोग जब रॉक चले गया, जोसेफ अंकल कर्नाटक चले गए थे, साली सी यूज्ड टू कम, वो सब पूरा देख रेख करती थी एंड ऑल दैट. तो वो उसने उसका कोई कंसर्न था नहीं, उसने अनवर के साथ मिल गया. अभी तो सब कुछ मेरे पोजीशन में सर, क्योंकि मैंने सब डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया और मैंने इसके ऊपर भी सूट फाइल किया. बीएमसी में मैंने कंप्लेंट की थी कि अनवर इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है. वो कैसे आ गया, मैंने जोसेफ अंकल को फोन करके पूछा कि सर आपने किसी को अनवर को ये प्रॉपर्टी बेची, तो उन्होंने बोला मैंने नहीं बेची. मैंने उनको कर्नाटक से बुलाया, एज ही इज ए सीनियर सिटीजन, उनके पैर में तकलीफ है, वो अपने भाई की डेथ पे भी नहीं आ पाए थे क्योंकि ही इज नॉट वेल यू कैन से. तो उन्होंने आया, सब मेरे साथ में कंप्लेंट की, सब की, और रॉक की सिस्टर से चाबी ली पुलिस के पास से. So then why were you arrested? See, sir, police gave the keys to Joseph D'Souza. And these same police who take the keys from Jacinta and hand over to Joseph D'Souza, they arrested me in 380 housebreaking, trespasses and forgery. The same police. House breaking of your own house. Yeah, of my own property. The same thing. So there was, I think, police was under tremendous and immense pressure. From because ये बहुत चर्चित केस था, ये बहुत चर्चित केस है पूरे मुंबई में. 2017 में जिस प्रकार से सेलिन वायलेट डिसूजा का मर्डर हो गया था, it is one of the unique cases where the husband is murdering his, killed his wife, which is now termed as accidental or जो भी है. Now the point is that particular time it shook Mumbai. Yes. And they both were there. इनका ये तकलीफ था, इनका जो पब्लिक रिलेशन है वो कुछ नहीं था. सब लोग को इनको किसी को नहीं मालूम था कि दिस लैंड वाज बॉट बाय हिज फादर इन 1980. And there are documents to prove that. He has got documents. We have been verifying the documents, and we saw that the land was bought in 1980 by his father, but they were not interested because everything was going on. आपने शायद MOU भी साइन किए थे, डेवलपमेंट के सब कुछ है. तो public at large were not aware. Public at large were aware कि लोग, because बगल में विलेज गाउटन है, तो गाउटन में सब लोग सोचते हैं कि क्रिश्चियन प्रॉपर्टी है तो लैंड भी कैथोलिक का होगा. It must be a गाउटन. But actually, the land belonged to somebody else. From them, they purchased it. His father purchased it. Now, this fact was not known to the public at large. Public at large thought that Mr. Abid Ali Tanaji has trespassed and entered into the property without knowing that actually he's got the papers to the land and he already had an MOU with those people out there.
Yes, not So- only to the Yes. land, but now he has an MOU with the people who also used to own the structure. बिल्कुल. That is also now in his That, name. that is also in his name. Now that is also his name. So we found that. लेकिन कहने का मतलब ये हुआ प्रदीप बिल्कुल, जी, ये मैं बिल्कुल, चाहूँगा प्रदीप जी और तानाजी, कहने का मतलब ये हुआ कि भाई आपके साथ तो जरा ज्यादती हुई है, लगता नहीं है? मुझे ऐसा लगता है। बहुत ज़्यादा समटाइम आई फील दैट आई एम नॉट इन मुंबई। ये यूपी में जैसा गुंडा राज चलता है कि कुछ भी कर लो, कुछ भी जगह खा जाओ, पुलिस को भेज दो, उठा के ले जाओ। मेरे साथ बिल्कुल यही हुआ। क्या डॉक्यूमेंट जो पुलिस ने मैं ली। आपसे एक जानना चाहता हूँ तानाजी, आपका पूरा नाम क्या है? सॉरी। आबिद अली मुश्ताक तानाजी सर। आबिद अली मुश्ताक तानाजी। आबिद अली मुश्ताक तानाजी साहब, क्या ये सब आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप मुसलमान हैं? इज इट बिकॉज यू आर अ मुस्लिम? माइट बी बिकॉज हर इंडियन मुस्लिम को थोड़ा बहुत तो ये सब फेस करना ही पड़ता है सर। और यहाँ ऐसा है जो सर इसमें अभी जो दूसरे लोग भी घुस रहे हैं ना सर, वो भी मुस्लिम ही लोग हैं। उनको पता है कि एक ओनर तो मुस्लिम है। यहाँ से जो अनवर आ रहा है, ये भी एक टुकड़ा है जो एक फरीद अंसारी क्लेम कर रहा है कि ये उसने इब्राहिम राजन से ये खरीदा। पार्किंग लॉट जो है, हाँ, जहाँ पे आपकी गाड़ियाँ पार्क्ड हैं। एक पीआर कार्ड वो ओन कर रहा है करके। और ये जो लोग हैं, ये समझ लो अनवर भी है, फरीद भी है, ये रिलेशन में ब्रदर इन लॉ ऐसे है। इसका भाई अनवर का फादर वाज एक्स म्युनिसिपल काउंसिलर। वो तो अलग बात हो गई। और इसका भाई भी म्युनिसिपल वो तो बात काउंसिलर। हो गई, लेकिन फिर भी प्रदीप जी, Yes, sir. आप वकील हैं, यू आर एन एडवोकेट। बिल्कुल. I've been a journalist now, as I said again, for 40 years. Yes. I've never seen a case like this. Very frankly speaking, Lot of twists and turns, sir. Lot of twists प्रदीप and जी turns. ऐसा केस, That's why it's very interesting where you're concerned. प्रदीप जी Specific- ऐसा केस उत्तर प्रदेश में भी नहीं होता है, ये बता दूं आपको। Yes. बदायूं में, अमरोहा में, Yes. मुजफ्फरपुर में, Yes. मुरादाबाद में, रामपुर में, Yes. वहां पर भी ऐसा केस नहीं होता। Yes. मतलब कि जिस आदमी के नाम पर जमीन है, Yes. उसको ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग के केस में, यानी इन्होंने हाउस ब्रेकिंग करी, घर के अंदर घुसे, अपने ही घर के अंदर घुसने के जुर्म में इनको जेल में डाल दिया। मतलब Yes, sir. अजीब गरीब मसला है। तो व्हाट डिड योर लॉयर से? डिडंट योर लॉयर पॉइंट दिस आउट टू द जज एंड फाइनली आई थिंक यू वर ग्रांटेड बेल बाय द हाई कोर्ट, इजंट दैट करेक्ट? दे टुक ऑल द डॉक्यूमेंट्स। और जब मुझे अरेस्ट किया तो इन लोगों ने हाउस सर्च किया और मेरे जो डॉक्यूमेंट यहाँ से ले गई पुलिस ने, वो मेरे पास ना कुछ दिया लॉयर को प्रोड्यूस करने के लिए ऑन क्या ग्राउंड है बेल के लिए एंड ऑल दैट। देन आफ्टर सर्टेन टाइम माय वाइफ शी वेंट एंड शी पुट इन आरटीआई डॉक्यूमेंट के लिए। तो इट टेक सम टाइम टू गेट द डॉक्यूमेंट्स। आरटीआई का वो आखिर में जो आपको लैंड के डॉक्यूमेंट जो पूना से मिले, हाँ, जो रिप्लाई ये कलेक्टर ऑफिस से मेरी वाइफ को मिले सर, उसने जब वो कोर्ट में प्रोड्यूस किया, वो ग्राउंड पे मुझे बेल हुई। और जज ने पुलिस को बोला भी कि आप पीआई हो या हवलदार हो। Justice Gadkari, Yeah. our friend, the most amazing judge. I'll tell you what, Bombay High Court, Justice Gadkari, he just gave such a wonderful order where SpiceJet is concerned. हमारे दर्शकों को याद होगा। Wonderful, really proud of the Bombay High Court. वाइफ को बोला भी था कि आप इस ऑफिसर के खिलाफ केस करो करके। Now this is really and truly terrible. मुंबई में रहते हुए, मुंबई financial capital of India. Actually speaking, they say this is the financial capital of South Asia. बिल्कुल सर. यहाँ पर 21वीं सदी में, we are in 2022, for God's sake, how can such a thing happen? I mean, ये मेरे दिमाग में बात घुस नहीं रही है। और उसके बाद में सामने वाली जो पार्टी है, जिन्होंने सब कुछ बेच दिया, लेकिन उनकी लार टपक रही है क्योंकि उनको मालूम पड़ा कि यार इस जमीन की वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, तो कुछ और ले लीजिए। उन्होंने अपनी पूरी सेना तैयार करी और उस सेना ने आबिद अली तानाजी के खिलाफ ऐसी मुहिम चलाई, इनको लैंड माफिया बता दिया, गॉडफादर बता दिया, पता नहीं क्या कुछ नहीं बता दिया अभी तक। और क्या क्या बताया आपको? डाकू मान सिंह, क्या और कुछ बोला? डाकू मलखान सिंह, ऐसा कुछ बोला होगा आपको? सर बहुत मेरी इमेज एकदम नेगेटिव इमेज करती है सर पूरे मार्केट। और छोड़िए, अखबारों में भी आ गया लैंड माफिया। They never bothered to take his version. That is the whole point. They never bothered even once. That is a basic principle of journalism. Where I grew up, from the very first job that I have got till today, आप दोनों वर्षन लेना अनिवार्य है, unless you are dealing with documents. दोनों वर्षन लेना आपका अनिवार्य है। इस आदमी के पास पूरी मिल्कियत के डॉक्यूमेंट हैं, सब कुछ इनके फेवर में है। आज भी अपनी ही जमीन पर ये यहाँ खड़े हैं अपने पैरों पर हमारे साथ, और इनको आपने लैंड माफिया बता दिया। मुझे तो ताज्जुब होता है कि आज के दौर में कैसी पत्रकारिता चल रही है। प्रदीप जी सर, इफ यू जैसे हम लोग आज भी हम लोग यहाँ आने से पहले वी इन्फॉर्म द पुलिस
we said we'll take your version. We informed, there's an advocate Pandey. प्रशांत पांडे जो है एडवोकेट प्रशांत पांडे उनको मैसेज छोड़ दिया कि हम आज स्टोरी कर रहे हैं, आप अगर चाहते हो अपना वर्जन लेके हमारे सामने आइए। और जो उनके क्लाइंट है जो रॉक डिसूजा who is said to be discharged from authority jail, हमने उनको बोला कि उनको भी आप लाइए। We would like to talk to him because everybody should know the fair things. We have seen his documents. There is a chain of documents from 51, 52 to 1980 to 1999 till now. And we, as you said, all versions, all sides of the version, documents from collector office asking that his name should be included, and there's another document from the additional collector's office saying that he was talking about two people, Farid Ansari, who claimed this part of the property. He says he bought it from the heirs. This part of the property is different from the rest. He bought it from grandsons of Ibrahim Rajan Megoji. Ibrahim Rajan. Grandsons of them, which was struck down by the city survey office because they said Ibrahim Rajan Megoji doesn't seem to be the Ibrahim Rajan you are referring to. Rajan, yes. Ibrahim Rajan. जो ओरिजिनल ओनर जो है वो इब्राहिम राजन मेगोजी हैं। Yes. इसलिए गलती कर गए फोर्जरी में। Yes. So we will try and take Mr. Farid Ansari's version also. We will try, and there was another protagonist in this entire thing. वो जो green spot है जो लिखे गए थे Mr. one of the most Anwar Razak Khan. They are well known. Is Mr. Joseph here now? Rock's brothers here. Can we speak to him? Yes. Let's go. So Ibrahim, this actually property belonged in 1952. One guy named Brazil Polycarp. He gave it to Ibrahim Rajan Megoji, and Ibrahim Rajan Megoji sold it to his father. He sold it to Mustaq Tanaji, and then his father gave it to him as a gift deed. Now there's a misconception कि ये Gautan property है, ये Christian property है. This is a gentleman. This is Rock's brother, sir. This is Roque D'Souza's brother, Joseph D'Souza, Joseph Louis D'Souza. His name is also. How do you do? He is also. My name is Rajiv Bajaj. He is also. This is Advocate Pradeep Nambiar. Yes. And of course, Abid Ali Tanaji. So he's also, his name was included. Sit down. Yeah, please. His name was also Imla Malik. The structural, you are also part of the structural owner. Your name was there as a structural owner. Can we switch off the AC? Yes, structural owner. Structural owner. You are also mentioned as a structural owner, and you say that the entire property or the land on which the property is belongs to him. Yes. It belongs to Mr. Tanaji, Abid Ali Tanaji. Yes. And you also say that the structure was a surrender of tenancy was done to Abid Ali. Yes, Abid Ali Tanaji. So, his father. So when was the structure surrendered to Abid Ali Tanaji's father? In 1980. In May 1980. Yes. 1980. Right. And Abid Ali Tanaji's father's. It was given by Mr. Ibrahim Rajan. So land. Land. We're talking about the structure also. We're talking about the land. और जहाँ तक स्ट्रक्चर का सवाल है, क्या स्ट्रक्चर पे भी MOU आपका साइन हो गया है इनके साथ? With my brother it was. MOU was done by my brother. Took me to the Bandra court, and MOU was done. Between my brother, me. Yes. MOU. After that. And what did the MOU say? MOU said that the land, the structure was about costing 90 lakhs. Yes. Structure cost was 90 lakhs. 70 lakhs paid by, after making the MOU by my brother, 70 lakhs was paid by Abid Ali in two parts, cash. 50 lakhs taken by my brother. Yes. Because he wanted to buy a flat in Yeshwant Nagar, Wakola. So has the full 90 lakhs been paid now? Yeah, now the 90 lakhs is paid because 20 lakhs was balanced. So my brother again made a, what is that? Power of attorney. Gave me the power of attorney to collect the 20 lakhs from Abid Ali Tanaji. And did you collect it? I collected the 20 lakhs and I gave him the power of attorney to Abid Ali Tanaji. And did you
part with 10 lakhs and give it to your brother after that, No, when you he got had that 20 taken- lakhs? He had taken already 50 lakhs from me. he had already taken 50 lakhs. Yeah. So you were already 10 lakhs short. Yes. Okay, okay. Right. Now, यहाँ पर ये बताएं, जोसेफ साहब, और मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दूं, जिन लोगों को शायद ये समझ ना आ रहा हो, स्पेशली जो लोग दिल्ली के हैं, बाकी जगह के हैं, कि जमीन किसी और की, स्ट्रक्चर किसी और का, स्ट्रक्चर इन साहब का था और इनके भाई का, जमीन इनकी, और स्ट्रक्चर भी हैंडओवर कर दिया गया इनको ऑन ए पेमेंट ऑफ 90 लाख्स। अभी तक ठीक है? ठीक बोल रहा हूं सर? कोई गलत तो नहीं बोल रहा हूं? एमओयू साइन हुआ, एमओयू रजिस्टर्ड है, सब कुछ रजिस्टर्ड है। अब ये बताएं जोसेफ साहब, आपने एमओयू साइन किया, अपने भाई, आपके भाई ने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दिया, आपने अपने भाई को 90 लाख में से 50 लाख रुपए दे दिए, उसकी एक्सेप्टेंस रिसीट है कि उसने 50 लाख रुपए लिया आपसे? हाँ जी। Did he? You have a receipt that he has accepted 50 lakhs from you? Yes, yes. Right. After all, if he has handed over all the rights of the structure also to Mr. Abid Ali Tanaji, then sir, do tell us, why did the Mumbai police, the Vakola police, why did they decide to arrest you and put you in jail? Could you tell our viewers that? Just look at that camera. After he coming out of the jail, he has put a robbery case on me. And robbery case on me, as in that the FIR is indulged and 3 people are there. Mr. Tanaji was arrested in January 11th. FIR he did after coming out of the jail. And Mr. एक मिनट, ये अपने दर्शकों को बता दें, इनके भाई साहब का नाम क्या है? इनके भाई साहब का नाम Roque Louis D'Souza. Roque Louis D'Souza. Roque as in R-O-Q-U-E? Yes. Roque, R-O-Q-U-E, Roque D'Souza साहब, Roque Louis D'Souza साहब इनके भाई हैं। वो जेल में इसलिए थे 4.5 साल तक कि उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने, आरोप ये था कि उन्होंने अपनी बीवी का कत्ल किया है, जो उन्होंने कबूल किया, और बाद में उन्होंने अपने इकबालिया बयान को वापस ले लिया, और अब वो पूरा केस जो है वो एक्सीडेंटल डेथ का बन गया है, एक्सीडेंटल डेथ, जिसकी वजह से अभी वो साहब बाहर हैं। नाउ आफ्टर कमिंग आउट ऑफ जेल, ही accused you, Mr. Tanaji, and one other gentleman, Mr. Prem Chandran. Of Civil of robbery. Yeah, no, Prem Chandran of robbery. Yes. Accused What of- was robbed? We have nothing is robbed. What did he say was robbed? He said my valuables of 2 lakhs are robbed by my brother. Right. So that's why you were arrested. Yeah, that after so many years, in 2000 March 2022, 5th March, they came and they just to Udupi and arrested me from there. Right. And when did he say that the robbery took place? Because he has put the code numbers of the robbery. That is, when did he say? It was in January 11th of 2 years before. That is 2020. 2019. Wow. 2019 मतलब कहने का ये मतलब ये होगा कि 2019 में उनका ये कहना है कि हमारे भाई ने हमारे घर के अंदर घुस के हमारे वैल्यूएबल्स चुरा लिए। मतलब कहने का ये हुआ। क्या बात, माशाल्लाह। The blood brother and Yes. blood brother here is accused of not only entering trespass, But robbery. He is also a structural owner, part structural owner. He is also part of the agreement where the tenancy rights were surrendered, where they have given rights to them to develop the place, and they have taken money. In spite of all these documents, he goes inside the jail, and Tanaji goes inside the jail. How long were you in jail, sir? I about 1 week, 1 or 2 weeks, 10 to 12 days. 10 to 12 days. Out of that, how were you? I was in the police custody for 6 days. And then after that? 6 days, in 6 days, on the 3rd day, my brother comes, along with the PI, that lady officer, who is, and then he take the permission, and he comes to the jail custody with another one gentleman. He is in away, and this one, other one is Pandey? that not Pandey, other one, Tosar. These 3 of them,
They come with him in the police custody. He is offering me 50 lakhs. You take this 50 lakhs, otherwise I will kill you. From Pandey. Your brother, Yeah, my brother. In front of them. In front of the senior PI in charge of Vakola police station and another police inspector. Yes. And 3 of them. All right. And they threatened you. Yeah. I did not, I said no. And you take it from Pandey. Next, after they torture me. Why you are not taking it? What is the reason for not taking it? I said no. Why should I take it? In what basis I should take it? No. So they harassed me. Next day, Pandey comes in the police station. And Mr. Pandey is a lawyer. A lawyer. Right. He comes in the police station in front of the same PI and the Tosar and other one, Nave. He comes and he says to me, Joseph, why you are running? I said, I am in front of you. What do you mean by running? I am in front of you. What do you mean by running? Come, join with your brother, with me. We can fight Tanaji and take the property back. I said, why? What is the reason? No, I don't want to. So effectively what they were telling you to do was to join them to prevent this man from taking over his own property, the property which you have already sold to him. मतलब आपने प्रॉपर्टी बेच दी और वो ये अब बोल रहे हैं कि इसको वापस ले लो किसी भी तरीके से. It is costing about 50 crores. 50. And you are just taking this peanuts. That's what he said. Isn't that amazing? Now, Pradeep ji, Yes. this is as far as it goes. Yes. Now, my point is, बिल्कुल. कहने का मतलब ये हुआ Yes, yes. कि आदमी ने A, यानी Mr. A, Yes, yes. sells property to Mr. B. बिल्कुल. Mr. B gifts that property to his son, Mr. C. Yes, yes. The heirs of Mr. A, Yes. or the people who were living as tenants here, who had right over the structures, Yes, yes. they decide, because the property's value has gone up, Bilkul. and by the way, it is nowhere near 50 crores. It is not. It is not. That's a pipe dream. Yes, yes. Because the value of the property has gone up, property की जो कीमत है, जमीन की जो कीमत है, वो बहुत बढ़ गई है, इसलिए कुछ भी करके जो चीज हमने बेच दी है, उसको धोखे से वापस ले लीजिए, कंस्पिरेसी से वापस ले लीजिए. कहने का मतलब ये हुआ ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें पूरा इस we find this kind of things here because number one, the entire thing sir is spelled out of misinformation. Nobody thought Mr. Tanaji's role was not known to the entire people outside that actually he is the owner of this property. Nobody knows, the public out here and the newspapers who have printed this particular placed one side of the story without confirming whose name the land is. He's got a chain of documents which is not known to other people. Structural owners were them. They also have surrendered. Yes. Belongs to. Yes. The structure, yeah, his name, Mr. Joseph's name is also in the structure as a structural owner. So there is also documents to show that they have surrendered the particular tenancy to Tanaji. They have handed over for development. All these documents are there, which was out of bounds of public. So as you said, one particular angle, nobody knows that Tanaji has the documents, but everybody vilified him. A criminal case was filed of trespass. A case of sections also of forging documents were put in that particular FIR in 2019. 2 people were arrested, Tanaji and Mr. Chandran. Then, for 2 years, Joseph was not arrested. In 2022, he was picked up. From Udupi. From Udupi. From Udupi. After the charge sheet and everything was filed, he was picked up. So, something has crept up now, which has forced another action. What would that be? That is something. You know, if Tanaji साहब could come here, Yes. if you could come this side. Yeah, बिल्कुल. Now, Tanaji साहब, ये बताएं, आबिद अली तानाजी साहब, ये बताएं, जैसे अभी डिसूजा साहब ने जो हमको बताया, अभी क्या हुआ है कि 2022 में इतना लोग फड़फड़ाने लगे हैं, क्या हुआ है ये कि कोई इनको बायर मिल गया है, कोई इन्वेस्टर मिल गया है, क्या हुआ है? सर एग्जैक्टली मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि एक आरोपी जो मर्डर केस में अंदर था
वो पूरा जीरो है सर, इसके पास कुछ है ही नहीं. व्हेन ही वाज हियर आल्सो ना, वो जो पैसे लिया फ्लैट लेने के लिए उसने शायद अपनी साली के साथ या पूरा खैर, पैसा वो उसने उनका उड़ा मामला जाने दिया. दीजिए. उसके पास कुछ है ही नहीं तो जी. वो फाइट करे. एवरी नाउ एंड देयर इज एन आर्टिकल इन मिड डे, पुलिस मुझे हेरेस कर रही है. हु इज बिहाइंड दिस? देयर इज अ टीम हु इज फाइटिंग अगेंस्ट मी, बट आई डोंट नो एग्जैक्टली हु इज द मेन पर्सन. वो नहीं, पुलिस आपको हैरेस करेगी का क्या मतलब है? क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं उसमें चार्जशीट फाइल हो चुकी है, आपको बेल मिल चुकी है, तो पुलिस अब कैसे आपको हैरेस कर सकती है बताएं? मैं आपको मार्च 3 तारीख, 14 तारीख, 17 तारीख, 21 तारीख, 24 तारीख के 5 लेटर अभी दिखा दूंगा सर, जो सीनियर पीआई ने मुझे भेजा है, कॉलिंग मी फॉर एन इन्वेस्टिगेशन. तो बट इवन आफ्टर द चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड, और मैं 10 बार पुलिस स्टेशन विजिट कर चुका हूँ. दे आस्किंग मी फॉर द डॉक्यूमेंट्स विच दे हैव ऑलरेडी टेकन. मेरे से ले लिए, हाउस सर्च करके ले लिए, पंचनामा करके ले लिए, सब ले लिए. मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे से लेके लोग वापस मुझसे मांग रहे हैं. आई डोंट नो वेदर वो लोगों ने मेरे डॉक्यूमेंट पांडे को भेज दिए हैं, क्या किए हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन एग्जैक्टली, आई डोंट नो. नाउ आई वेंट एंड टोल्ड दैट सीनियर पीआई कि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मैंने ऑफिसर इंचार्ज को ऑलरेडी दे दिया. शी सेड यू राइट एंड गिव इट टू मी. मैंने मेरे लॉयर के पास से लेटर दिया 17 को, अगेन 21 को उसने मुझे फिर से लेटर भेजा. फिर मैंने राइटिंग में मेरे पर्सनल टाइप करके लेटर दिया कि आई हैव सबमिटेड ऑल द डॉक्यूमेंट. अगेन शी इज कॉलिंग मी टू द पुलिस स्टेशन. व्हाट इज इट? फॉर व्हाट? isn't that illegal, Pradeep ji? As far as I know, once the charge sheet has been filed, shouldn't the court be summoning him? Shouldn't the police be telling the court that we are still continuing with the They have to investigation? inform the court. Even if they're sending a new notice, they need to inform the new investigations, new findings that have come, and on which based they can call him for inquiry. I mean, that's but what here, what, as he says that we have already submitted, means all the original documents are taken from me. मेरे पास कुछ पड़ा नहीं है, हमने लिखित भी दे दिया. As he says, I've already given in writing. So there seems to be some other big angle going out here. अब The यहाँ matter is in the court. प्रदीप जी, Yes, बिल्कुल सर. यहाँ पर तो इस जमीन को खोद करके देखना पड़ेगा, कहीं सोने की खान तो नहीं है इसके पीछे. इसको हो सकता है हीरे जवाहरात, सोना, Yes, yes. पुराना, some Portuguese treasure might be lying over here. You know, Catherine of Braganza's Yes. actual treasure, Yes. her real dowry must be, you know, buried right here right. under this plot. to get settle this matter sir. मेरे पास आ जाओ, मैटर सेटल करेंगे. आपकी कंप्लेंट मेरे पास आई है. पॉलिटिशियंस, शिवसैनिक, ये वो हर पार्टी का आदमी मुझे एवरी ऑल्टरनेट डेज कॉल करता है कि आप आ जाओ, आपका मैटर हमारे पास है, हम सॉल्व. क्या है, क्यों, क्या है ऐसा इस जगह में, मैं भी जानना चाह रहा हूँ सर. उसमें क्लियर लिखा है कि स्ट्रक्चर ओनर ऐड देता है मिड डे में 50 करोड़ का. शाहरुख खान का स्ट्रक्चर है क्या है? स्ट्रक्चर पूरा खंडर था सर. जब मैंने पोजीशन ली यहाँ से सांप और क्या क्या नहीं निकला. और पीपल स्टेइंग क्लोज बाय, दे विल टेल यू ये पूरा जंगल जैसा था सर. मैंने उसको अच्छा किया तो आज सबकी नज़र में आ गया. आई डोंट नो हु इज बिहाइंड दिस. वो मुझे पुलिस But you are going to fight, isn't that right? Sir. You are going to fight because Yes, it is yes. your property. Your father gave it to you. Yes. It is your property, Yes, and Mr. Joseph D'Souza is standing by you. From my father who is passed away a few months back sir. So definitely I will fight. Right, and that's it. That's all we've got for you from here, from this particular plot, which is the most infamous, most notorious, most well-known plot in Mumbai. याद रखें, यहाँ पर मर्डर हुआ और उस मर्डर को अब एक्सीडेंटल डेथ में कन्वर्ट कर दिया गया. मैं भी ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है. हम आपके सामने ज़रूर लाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस ज़मीन में है क्या, इस ज़मीन के ऊपर इतने ज़्यादा लोगों की नज़र क्यों है. फ्रॉम हियर, फ्रॉम सुंदर नगर, फ्रॉम बोथ प्रदीप नाम्बियार जी and myself, I am signing off for Nation Now. See you again tomorrow.